IPL has become a gold mine for investors. ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आप सबने ये तो जरूर सुना ही होगा कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इज गेटिंग सोल्ड, लेकिन आपने शायद ये नहीं सुना होगा कि लखनऊ सुपर जायंट्स भी $200 मिलियन का अमाउंट रेस कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, CSK is planning to bring IPO in about 2 to 3 years. इसका मतलब ये तो क्लियर है कि IPL ट्रॉफी जीतना सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है IPL का। The main game is being played in franchisee boardroom, जहां 2008 में IPL franchisees were bought for around $111 million. 2025 में Royal Challengers Bengaluru is being sold around $2 billion. I mean, what's actually going on? और ये sudden change कब और कैसे आया? Let's break this down in today's video. सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की। LSG is about to raise $200 million from a UK-based consortium led by Jordan Associates for a 15% stake in the team. इसका मतलब है कि LSG जिसकी मार्केट कैप 2700 करोड़ थी, उसकी वैल्यूएशन 11,000 करोड़ बताई गई है। I mean, this will be a great profit for RPSG as they are the 51% owners of the Lucknow Super Giants franchisee. इसके बाद बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। Recently ही कुछ रिपोर्ट्स की माने तो चेन्नई सुपर किंग्स is planning to bring an IPO in about 3 to 4 years. लेकिन इससे भी बड़ी बात एक और है। CSK has already started planning about developing an ecosystem. I mean, CSK के पास already IPL में एक टीम है, साउथ अफ्रीका T20 लीग में भी एक टीम है and they have one team in USA as well. इसके अलावा CSK is also building a high performance cricket center on 16 acres in Chennai with good training facilities, a health club and retail spaces as well. इसका मतलब जब 3-4 साल बाद CSK अपना IPO लाती भी है तो वो सिर्फ एक फ्रेंचाइजी नहीं बल्कि अपना एक पूरा CSK इकोसिस्टम बना चुकी हूँ। This clearly means that these franchisees now just don't look for the IPL trophy, but try and expand their visions in the sporting culture, which eventually brings them money. The result is clear. जहाँ 2008 में सबसे पहली बार फ्रेंचाइजीज खरीदी गई थी, तब सबसे महंगी टीम was Mumbai Indians for around $111.9 million. इसके बाद 2022 में दो न्यू टीम्स एंटर हुई, गुजरात टाइटंस एंड लखनऊ सुपर जायंट्स, and the amount for these teams was $600 to $900 million, 8 or 9 times higher than the inaugural season. IPL has shown the highest growth in comparison to other leagues, and the numbers will make your head spin. 2025 में IPL's brand value approximately $18 billion. Global viewership 600 plus million across 200 plus countries. Media rights 10,000 crores per year. Sold out stadiums, jam-packed audience and overall an ultimate craze for the IPL franchisee. The numbers actually prove that running a cricket team prints money faster than the Reserve Bank of India. So but obvious चीज है कि दुनिया के कई investors IPL की teams को खरीदने में interested होंगे. And I am sure IPL team owners are facing the same dilemma, whether to share their gold mine with the new owners or not. What do you guys think? क्या आने वाले कुछ सालों में काफी सारी IPL teams के owners change हो जाएंगे, or else everything will be the same as it is? Let us know your reactions below and stay tuned for more interesting cricket updates.